students. So I am going to start your next class on abnormal loss. Okay, I hope तुमने normal loss बहुत से बुझियो. So what is abnormal loss? I have already said you in my last video that it is unavoidable loss. Sorry, it is avoidable loss because अगर मैं avoid कर पारे, control कर पारे, but due to our negligence we are incurring this loss. Okay, abnormal loss treatment. Okay, let me start. So process costing. Okay. Abnormal loss. So I am going to start on abnormal loss. Here it is the question. Look, I am reading it out. In process A, 100 units of raw material were introduced at a cost of 1000. So देखो raw material रो units दे दीजिए 100 and the cost भी दे दीजिए 1000. Okay. Other expenses दे दीजिए 602. Okay. और कुछ expenses दे. अच्छा 10% are lost, normally lost. Okay. At a scrap value of ₹3 each. That means ये जो lost है सेटा sell होची. 10% जहाँ भी loss है ला 3 टका लेखा सेटा sell होची. Okay. Now the process A output is 75 units. एटी देखा आउटपुट दे देना सब बड़े आउटपुट केमती हुए बैलेंसिंग फिगर टा हुए हमें डेबिट रु क्रेडिट माइनस करो बैलेंसिंग फिगर को लेको बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी से जो व्हाट ट्रांसफर कौन हुए आउटपुट ऑफ प्रोसेस से ट्रांसफर टू प्रोसेस बी ओके बट एटी क्वेश्चन रे बैलेंसिंग फिगर ना दरकार नहीं बिकॉज़ क्वेश्चन ऑलरेडी दे देछि इट इज 75 यूनिट्स ताहले बैलेंसिंग फिगर आउ किछि बाहर ओके दैट बैलेंसिंग फिगर शुड बी abnormal loss और गेन एमती ना कि abnormal loss ही हो जदि क्रेडिट साइड रे कम हैला शॉर्टेज हैला ताले abnormal loss जदि डेबिट साइड रे शॉर्टेज हैला ताले abnormal गेन तो तुमको कहथिले लास्ट वीडियो रे डेप्रिसिएशन रे जेमती जदि क्रेडिट पटे शॉर्टेज क्रेडिट पटे लॉस लिखा हुए एंड डेबिट पटे प्रॉफिट लिखा हुए सेमती जदि एपटे कम हैला क्वांटिटी ताले abnormal गेन एपटे कम हैला राइट साइड रे ताले abnormal loss राइट लेट मी स्टार्ट एठी देखो इट इज गिवन ओनली टू प्रिपेयर प्रोसेस ए अकाउंट तो खाली प्रोसेस ए करिया process A account like that we have to make columns units total units total now this is particulars this is units total now I have to write down the expenses first. Okay. So, 2 raw material given in the question, 2 other expenses. Because wages question में देनी. Only 2 प्रकार expense देची. Okay. आउटर देखी दिया. Expenses देची. Other expenses देखो देची 600 to raw material देची 1. So raw material 1000. Other expenses 602. ये units रे देची 100. So, how much expenses like? Then coming to loss. Normal loss is 10%. So, by normal loss. By normal loss, it is so कर 10% देजी. So 10% of 100, it comes to 10. Question is it is sold. Okay, the scrap value at ₹3 each. 3 टंका लेखा sold each. तो हमारे कितने टंका हला? 10 into 3 30 rupees रे sold clear now how किछि डाटा दीजिए देखो last data is your units output is 75 units एति की डाटा अछि ओके तो आउटपुट को हमें कौन लिखू बाय ट्रांसफर टू बी प्रोसेस बी बाय प्रोसेस बी ओके इट इज आल्सो नोन एज आउटपुट जोटा कि हमर देछि 75 rupees रे देन only quantity रे देछि it is 75 units okay now you as we know total debit must be equal to total credit so this 100 should be equal to this 100 but देखो एटी total कले 80 होछि 85 होछि 100 and 85 so तमने एटी मिसिंग अछि केते 15 that 15 is known as abnormal loss okay which is shortage in our factory due to theft or any other reason. Okay, so 15 is our abnormal loss balancing. I hope you understand.
Now amount केमती बाहर करें? Same process as I have said you earlier, balancing amount divided by balancing quantity. Now cost per unit. Okay, cost per unit equals to balancing amount divided by balancing quantity. Now balancing amount is, here it is 1602, right? So 1602 minus 30 because credit side रे गोटे amount अच्छी. Now divided by balancing quantity 100, debit रे 100 अच्छी, credit रे कितने अच्छी? कितने ना हो? Only 10 because जहाँ side रे amount नहीं ताको धरा हुए. Okay, only normal loss को minus 10. So it comes to 1572 divided by 90. This is equals to, then we will going to divide it. Okay. Now it comes to, let me do directly multiplication, okay, so that it will be easily cut into जहाँ भी बाहर हुआ हमें ताको 15 संगे मल्टीप्लाई करिवा, right, and 75 संगे मल्टीप्लाई करिवा. So मैं डायरेक्ट कर दूँगी into 15. Okay, it comes to 262, right? So here you can write 260. Like that, in case of output, we will take it 172 divided by 90 into 75. It comes to 1310. Okay, or else you can take the balancing figure. As you know, एठी तमरो 1602 हबो, so you can take it as balancing figure also 1310, right? So the answer is complete. I hope you understand abnormal loss केमती बाहरला. First you have to take the balancing figure, and balancing figure आगे units रनाबो, amount रनाबो. Units से बाहरी गला 15 unit, then ताको तारा amount केमती बाहरीबो, तो amount बाहर करे पे तुमको सेमती बाहर करिबो balancing amount और balancing quantity. ये सेमती बाहर करले 262 बाहरी गला डायरेक्ट. वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देले एटी. Okay, then 75 will be added, and the answer is complete. Okay, I hope you understand. Now I am going to next question of abnormal loss. Okay, let me start the second question now of abnormal loss. Okay, see, X Limited manufactures its product in 3 processes. Okay, output transfer to process C from process B 1920 units. Question में directly देखो दे ही देची, कोड़ता देची 3 process. Okay, second से देची output transfer to process C. Transfer to माने balancing figure of process B. Okay, process B रा काम दाम ने सॉरी जाइची, खाली process C करियर अछि. देची process B रू process C को 49,263 रा दिन सा transfer है. In units देखिले 9,120 units. ठीक अछि, तो मैंने output दे देना. Then expenses of process C देखा दे दीची, direct material, direct expenses, direct labor, overhead expenses. 4 प्रकार expense देची. Now wastage देची and final product sold. ये rupees रे देची कितने रे sold देची. Finally हमको कौन बाहर कर रही है देखो, find the percentage of wastage. तो मैं जानचो normal loss सब बड़े हमारा percentage रहता है, but एटी percentage missing अछि. Okay, that means this question is not of abnormal loss. एटा abnormal loss रा question नहीं. नहले एटी mention करता था it is abnormal loss. जेहेतु normal loss रा percentage देनी, तो हमने the answer should जहाँ भी बाहर ही बना normal loss ही बना. Okay, but it can be solved in equation. एटा भी exam पे important. Okay, so focus on it. Prepare process C account. खाली process C करिए because data भी only process C नहीं दिखी. Okay, ठीक अच्छे देखो process C account. Now देखो टिके concentrate करो because as it is equation जदि तुम्हें गोटे bit भी अन्य मनस पहुँचे then you cannot understand this. Now this is particulars, units, rupees, particulars, units. एक्सपेंसेस 4 प्रकार देजी 4 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस. तब आगे तो हमें ट्रांसफर लिखिबा जानछो जोडा प्रोसेस बी रु प्रोसेस सी को आस्तिबो टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी. ओके, इट देज ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी, आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम टू प्रोसेस सी फ्रॉम प्रोसेस बी 9,120 49,263. 9,120 49,260. Right now expenses लेको जहाँ जहाँ
direct expenses to overhead expenses, overhead charges. Okay, right? So question is easy. Now we have to check the amount. Coming to the amount, here it is material 1480, labor and expenses 1605. But overhead charges are 168% of direct labor, right? तो डायरेक्ट लेबर देखो केते अछि 6500, तार 168% हम हमर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने ओवरहेड एक्सपेंसेस. ओवरहेड एक्सपेंसेस इज 168% ऑफ डायरेक्ट लेबर. ताहले 6500 रो 168% नहीं गले हमर बाहर जी ओवरहेड एक्सपेंसेस, राइट? सो अब ये सॉल्व करे हमें आगे. सॉन्डर मटेरियल हमर देछि 49263. Sorry, it is not 14,600. It is 1480. Then direct labor it is 6,500. Then direct expenses it is 1605. And overhead charges it is 168% of labor. Okay, it comes to 10,920. Right? Now the debit side is over. Credit side रे मु कहली normal loss, abnormal loss ये सब लिखा हो. So एठी देछि by normal loss. Okay. तो normal loss सब बड़े percentage रे थाए. एठी देखो there is no percentage. एठी खाली देछि wastage or loss of process C is sold at 1 rupees. माने जहाँ नष्ट होइतला टंका लेखा बिक्री हिच, बट केते नष्ट हिच हमें जानिनी. सेटा जानिले सिना तमे मल्टीप्लाई करिवो. सो हमें कोन करिया. So it is missing. ठीक है. Now there is a final product. Out process C रा output 10 टका लेखा बिक्री हिच. तो सेटा भी हम पे प्रॉब्लम बिकॉज़ 10 रुपीस रे सोल्ड हेले कोन हला. केते क्वांटिटी सोल्ड हिच सेटा देनी. तो डबल मिसिंग हेले केमते बाहरिबो. यदि नॉर्मल लॉस दे देथांदा ताहले बैलेंसिंग फिगर हे जेथांदा आउट. यदि आउटपुट दे देथांदा बैलेंसिंग फिगर नॉर्मल लॉस हेथांदा. एठी बोथ मिसिंग देछि. देखो वेस्टेज रो भी क्वांटिटी मिसिंग देछि, फाइनल प्रोडक्ट रो भी क्वांटिटी मिसिंग देछि. सो that means there data equation baharibo. So equation ro x on. Okay, clear? Now in the question, okay, this is the question एठे एटा भी देछि कि final product was sold at ₹8 per unit. After fetching, okay, at a profit of 20% on sales. Question mention नहीं छी. Okay, by mistake I have erased it. Anyways से देछि त माने 10 टंका हला सेलिंग प्राइस. ताल कॉस्ट प्राइस केते? हमें एठी प्रोसेस कॉस्ट बाहर करछु. प्रोसेस कॉस्टिंग. वी आर डीलिंग विथ कॉस्ट, राइट? सेलिंग प्राइस संगे मल्टीप्लाई करले होबनी. जोटा हमारा स्क्रैप दैट इज यूज्ड इन सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई हो. बट बिकॉज एथरा हमें प्रॉफिट रखुन. हमर तो जिंस नष्ट हो जाईछि. हमको जेति की मिली गला स्क्रैप वैल्यू दैट इज प्रॉफिट फॉर अस. तो हमें से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रखू. बट जिते मुझे गोटे फिनिश्ड गुड्स को बिक्री करुँची 10 टका मोर किणा दाम मैंने 10 टका मोर खर्च है मैन्युफैक्चरिंग मुझे 10 टका बिकी मुझे के बिकी 12 टका बिकी 2 टका लाभ रखी मिनिमम. सो लाइक दिस कंपनी चार्जेस सम प्रॉफिट. ओके, नाउ एठी देछि 10 टका रे कंपनी बिक्री कला सोल्ड प्रॉफिट रखी 20%. तार खर्च केते थिला. ओके, सेलिंग प्राइस 10, प्रॉफिट 20% of 10. This is equal to ₹2. ताले cost price केते? Selling price minus profit. Okay, cost price this is equals to 8. Sell SP minus profit. Right? ता माने 8 टंका दा cost पड़े. ताहले हमारा जहाँ डाटा देछि ए दीटा बिट हमारा बाकी रहला. ए दीटा को हमें वर्किंग नोट रे करके इक्वेशन सॉल्व. अच्छा हमें ताले एठी जानिले एठी दीटा दिन से रहला बाय नॉर्मल लॉस
by finished goods because it is process C last other transfer होबोनी ये finished goods दे दीजिए by finished goods. अच्छा now हमको एटा तो जाना नहीं कि केते लॉस है तो let me take it x जदि normal loss x है suppose ताले finished goods केते as you know total debit must be equal to total credit so ये देखो हम total कर 9120 and 80 जदि डेबिट साइड टोटल करेबी इट इज 69768 राइट नाउ टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट सेम हो ताले एटा भी इट सेम हो 9120 69768 ओके ना एटा डील करिए जदि एटा x हैला ताले एटा केते हो 9120 माइनस x ताले एटा हो 9120 minus x right अच्छा क्वेश्चन ने देजी नॉर्मल लॉस इज सोल्ड एट ₹1 आउथर देखिए दूसरा हमको देखो नॉर्मल लॉस इज सोल्ड एट ₹1 एंड फिनिश्ड गुड्स इज सोल्ड एट ₹10 ओके ताले जदी 1 रे सोल्ड हला ताले एटा केते होबो x * 1 एटा केते होबो x फिनिश्ड गुड्स सोल्ड हेजी एटा फिनिश्ड गुड्स sold is at the rate of 8 10 नुह बिकॉज 10 रे प्रॉफिट अच्छी 20% जोड़ा हमें कन्वर्ट करके 8 बाहर करते कॉस्ट प्राइस पाओ ओके ताहले एटा हला 8 ताहले केते बाहरिबो ताको मल्टीप्लाई करले जदी याको मल्टीप्लाई करछो तमर बाहरिबो 72960 माइनस 8x ब्रैकेट खोल देले ओके माइनस 9 right now equation will be solved एटी गोटे इक्वेशन बाहर जीवो एपटे गोटे इक्वेशन बाहर जीवो यूनिट क्वांटिटी रो गोटे इक्वेशन ही जीवो एंड यार गोटे इक्वेशन स्टिल लेट मी सॉल्व इट फॉर यू याको हमें सॉल्व करियो दिस साइड तो याको देखो x एपट सॉल्व कर दो इजी फॉर यू तो इक्वेशन विल बी x प्लस 72960 minus 8x equals to this one okay 69,768 right solve करिए ब्रैकेट खोलो प्लस 72,960 minus 8x this is equals to 72,000 minus 8x equals to 69,768 right now this implies that 72,960 minus 7x equals to 69,768 now x गोटे पटे कर दिया अमाउंट गोटे पटे कर दिया this implies that minus 7x is equals to 69,768 minus 72,960 right एपटे प्लस थी एपटे असले माइनस है ना दिस इज इक्वल्स टू minus 7x is equals to 3192 right now 87 multiply हे किया छे एपटे असले इक्वल्स टू पर डिवाइड हे जो आई नो यू ऑल नो द इक्वेशंस हाउ टू सॉल्व ओके डिवाइडेड बाय it is in minus minus divided by minus so minus will be what 7 will be 7 if I cut it comes to 456 right the x is solved as 456 units jadi x solve wala then the answer will easily solve now what is taken as x first x hame kaha ko nei thile normal loss tahale amar ethi bahari gala normal loss equals to 456 units sold kete rehi normal loss value kete baharibo question e deyichi na normal loss value at the rate of 1 rupees 1 re 456 into 1 this is equals to 456 right like that finished goods bahar chi kete एठी अछि हमरा finished goods 9120 minus x so 9120 minus x this is equals to 9120 minus 456 which
comes to 8,664 units. And value of finished goods, at the rate of rupees 8, never take 10, okay, it will be at the rate of rupees 8. This is equals to 8,664 into 8, it comes to 69,300 and right value बाहर then तमें ताको सेठी पुट कर परिबो or else तमें एठी नॉर्मल लॉस बाहर गला 456 एटा हमर बाहर गला एठी पुट कर दोछु एटा बाहरला 8664. This is x into 1, x तो हे गला हमारा 456 right, तो एटा हे गला this is equals to 456 and एटा हमारा ऑलरेडी हे छी x जगह पुट कर दबो 9120 minus 8664 into 8, this comes to 69,000 right. एटा मु तुमको गोटे बॉक्स रे देखि देबी, तुमको दीटा बॉक्स कर रहै छै आगे x नै की करिवो इक्वेशन सॉल्व करिवो देन आउ थरे ड्रा करिवो फॉर्मेट ताको भल से लिखिवो. मु एठी तुमको बुझे भाई गोटे रे कर देली x पाखे ही लिख देली आंसर देन जोठी x ला पुट करिवो सब नाउ द आंसर इज कंप्लीट राइट. हमको जहां बाहर करे पे देतला देखो प्रिपेयर देतला फाइंड द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज एंड प्रिपेयर सी अकाउंट. The C account is complete and the percentage of wastage in process C. So you have to find the percentage. If you want find the percentage, then the percentage बाहर करें. Percentage of normal loss. Normal loss बाहर जाइए. Percentage आराम से बाहर जाए. Percentage of normal loss equals to normal loss divided by total quantity into 100. So normal loss केते बाहर चाहिए 456 divided by total quantity 9120 into 100. This comes to 5%. That means up to 5% the goods has been lost normally, right? So this is bit A answer. Okay. Process C. This comes to bit B answer, right? Both answers have been complete. I hope you understand. Okay. The question is also very easy. No problem. तमें बस let normal loss to x नबो. Finished goods is 9120 minus x. Likewise, ताको into 1 संगे रे multiply करिवो त and finished goods को into 8 संगे रे multiply करिवो. Finally, the equation is solved. Thank you.